Hello students, in this lecture we will study types of matrices, right? In first lecture we have discussed what is matrix, what is determinant, what is difference between matrix and determinant, and some simple examples, right? Now today we will discuss types of matrices. So before going to start the lecture, please subscribe the YouTube channel if you are not subscribed yet, so that you will get the updates time to time. Is that clear? So let us see two types of matrices. We can discuss some row matrix, column matrix, right? Column matrix, diagonal matrix, unit matrix, square matrix, right? Etc. etc. Is that clear? So can we start? So let us see the row matrix. Okay. So here you see row matrix. So what is the row matrix? A matrix having only one row. Number of columns may be more than one. Okay, so look at here, a matrix having a single row, one row. Is that clear? So what examples you can write here? A matrix is equal to 1 2 3 5. ओके, दूसरी और एक मैट्रिक्स हम लिख के देखेंगे, मैट्रिक्स 0 5. Okay, so look at here. Now in this matrix, how many rows are there? Rows 1. And what are the columns? Columns 1 2 3 4. So columns equal to 4. So what is the order? 1 by 4. It is a row matrix having single row. So similarly, what is the order here? 1 by 2. So did you understand the row matrix? Yeah, column matrix now. Similarly, a column matrix is a matrix having single column. A matrix having a single column. We can write here A equals to, look at here, A equals to 1 2 3 5, one vertical line. B equals to 0 5. Okay, so look at here, how many columns are here? Here column equal to 1. And how many rows are there? Rows equal to 1 2 3 4, horizontal line. So 4. So what is the order here? 4 by 1. Is that clear? Here also, what is the order? Order is 2 by 1. Okay, because rows equal to 2 and column equal to 1. So a matrix having a single row, single column is called a column matrix. Now what is a square matrix? A matrix having equal number of rows and columns. If suppose n number of rows are there, so number of columns also be n. So a matrix having n rows and n columns. Okay, so n may be equal to 1 2 3 dash dash dash. Is that clear? So look at here example. A equals to 1 2 3 2 3 4, right? And 3 4 5. Is that clear? Now tell me, what are number of rows here? Rows are 1 2 3 3. Columns equal to 1 2 3, right? So 3. So what is the order? Order is equal to 3 by 3. So m and m. Okay. Similarly, another matrix we can write B equals to 1 3 5 7. Is it a square? Yeah, because rows
equal to columns. Okay, that is 2 by 2, and therefore it is a square matrix. Is that clear? So square matrix is over. Now let us move diagonal matrix. What is diagonal matrix? Diagonal matrix is only defined from a square matrix. Is that clear? So a square matrix whose all elements are 0 except those in a leading diagonal element. Okay, now before that, what are the leading diagonal elements? Now you can see, कोई भी अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, ओके, सो लेट अस सी, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर ड्रॉ किया, बराबर है, ये स्क्वायर, इसमें दो डायगोनल बनते हैं, एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा. तो दिस डायगोनल is called as principal diagonal. Principal diagonal. और ये जो डायगोनल है, it is called as what? Minor diagonal. Okay, so we see that in a square matrix, if the elements at the principal diagonal elements are 0 and rest of the elements are non-zero and rest of the elements are 0, then that matrix is called a diagonal matrix. Is that clear? So a square matrix whose all elements are 0 except those in a leading diagonal element or principal diagonal element. Okay, we can write one example. Let us see example. Here you see, these are principal diagonal elements. These are principal diagonal elements. Okay, and बाकी के सब एलिमेंट 0 है. देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है. Okay, similarly another example we can write D equal to 1 0 0 5. Similarly D1, D2 we can write 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5. So look at here, the diagonals, leading diagonal elements are non-zero and rest are 0, and therefore it is a diagonal matrix. In short, symbolic form में अगर इसको हमको लिखना है तो we can say that aij is equal to 0 for I is equal to j, because you know that ये 1 एलिमेंट है, 3 है, इसकी पोजीशन क्या है a11, इसकी पोजीशन क्या है a22 और इसकी पोजीशन क्या है a33, थर्ड रो थर्ड कॉलम. Okay, and therefore aij is not equal to 0 for I is equal to j. Okay, and aij is equal to 0 for I not equal to j. मतलब rest of the element इसमें I और j equal नहीं है तो वो 0 हो गए. Is that clear? So that is the example of diagonal matrix. Now scalar matrix. A diagonal matrix whose all diagonal elements, leading diagonal elements are equal. It is called a scalar matrix. ये जो ऊपर की डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें ये 3 -2 6 के बजाय 3 3 3 अगर रहेगा तो इट विल बिकम स्केलर मैट्रिक्स, या -2 -2 -2 रहेगा तो भी इसको स्केलर बोलेंगे, या 6 6 6 रहेगा तो भी इसको स्केलर बोलेंगे हम. Okay, so what is a scalar matrix? A diagonal matrix whose all leading diagonal elements are equal. So we can write here scalar yes. Okay, look at here. Here you see these 3 3 3. Okay, we can write another example. S1 is equal to 2 0 0 2, right? We can write S2 is equal to 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5. तो ये 4x4 मैट्रिक्स है, 4 बराबर है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है. तो लुक एट द डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल and therefore these matrices are scalar. Is that clear? So diagonal matrix, is diagonal matrix a scalar? May or may not be true.
Okay, in a diagonal matrix, if all diagonal elements are equal, then it will be scalar. Okay, but converse is always true. मतलब every scalar matrix is a diagonal. Is that clear? Now unit matrix. Okay, the in a scalar matrix or in a diagonal matrix, if every leading diagonal element is 1, okay, then it is called a diagonal, unit matrix. So unit matrix I, it is represented by I. Okay, so we can write another example, I1 that is equal to 1 0 0 1. I4 fourth order. Okay, so it is equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Okay, ये fourth order, ये second order 2 by 2, 4 by 4, 3 by 3. Is that clear? So it is a unit matrix. Now tell me, every unit matrix is a scalar matrix, because in a unit matrix diagonal elements are 1 1 1, so they are equal, means it is also called as scalar. Okay, or in a scalar matrix all leading diagonal elements are equal, means non-zero. Okay, non-zero and equal, and therefore it is also a diagonal matrix, means unit matrix is a scalar matrix. It is also a diagonal matrix, but converse may or may not be true. Is that clear? So look at here. Unit matrix, scalar matrix, every unit matrix is a scalar matrix, and every scalar matrix is a diagonal matrix. But converse cannot be true. Converse cannot be true. For example, okay, for example, you just see एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, यहाँ पे 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4, राइट. ये डायगोनल है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है. ओके, डायगोनल है. इज इट स्केलर? इज इट स्केलर? देखो डायगोनल एलिमेंट इक्वल है क्या? नहीं है, मीन्स इट इज नॉट अ स्केलर. ओके, इज इट यूनिट? इज इट यूनिट मैट्रिक्स? नो. ओके, it is also because every diagonal element must be 1, so it is not 1, and therefore converse is not 2, means D, yes, you need not true all the times. Okay, so this is, then we say upper triangular matrix. Okay, now here unit matrix, what is unit matrix? Aij is equal to 1 for I is equal to j, and Aij is equal to 0 for I is not equal to j. Okay, and here is what? Here ये तो हमने लिखा ही है. Okay, so now let us see upper triangular form. Upper triangular form, so let us see a square matrix whose elements above the leading diagonal elements are non-zero. Okay, leading diagonal elements, look at here. Which are the leading diagonal elements? 3 8 3. और इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है ये नॉन जीरो है, नॉट ऑल जीरो, बराबर है. इट मीन्स दैट इसकी पोजीशन क्या है? A12, A12, A13, A23. तो ये तीनों एलिमेंट में व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? 1 1 2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ J? 2 3 3. मीन्स व्हाट? Aij not equal to 0 for I is less than or equal to j, less than or equal to j. Is that clear?
Is that clear? So this is called the upper triangular, and aij is equal to 0 for I greater than or equal to j. ग्रेटर देन और इक्वल टू जे. यहाँ पे देखो A21, A31, A32, ये तीनों इसमें हम देखते हैं I की वैल्यू ग्रेटर है, एंड देयरफॉर I ग्रेटर देन और इक्वल टू J. इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दूसरा एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम. U इज इक्वल टू 1 2 0 5. 2 by 2 की मैट्रिक्स है. ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है और इसके ऊपर का एलिमेंट नॉन जीरो है, नीचे का जीरो है. इज दैट क्लियर? तो ये हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सेम इज द डेफिनेशन फॉर रो ट्रायंगल. ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो. ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज द एग्जांपल. नाउ डेफिनेशन सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएंगी ये? दैट इज द aij is not equal to 0 for I greater than or equal to j, and aij is equal to 0 for I less than or equal to j. This is same. Okay, so this is what, or another example you can write L is equal to 1 0 3 5. तो look at here, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ है, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ. ओके, और इसके नीचे का एलिमेंट है नॉन जीरो है. इज दैट क्लियर? सो इट इज व्हाट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, UTM. इज दैट क्लियर? सो डिड यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? नाउ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? यू नो, अभी तक आपको ये तो पता चला कि what are the leading diagonal elements, right? The sum of all leading diagonal elements of a square matrix is the trace of that matrix. Okay, so we can write sum of leading diagonal elements of a square matrix. That is, in short, we can write summation of aij is equal to trace for I is equal to j. Is that clear? Means what? That is A11 plus A22 plus A33 plus dash dash dash. That is the trace. Is that clear? So let us see one example. This. So what is trace here? Trace कितना होगा? Trace is equal to कितना होगा? Diagonal, leading diagonal 1 plus 3 plus 5. Sorry, 5. बराबर है? 1 plus 3 plus 5 is equal to how much? 9. Okay, so understand? So trace is equal to 9. Similarly, दूसरा एक एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे. B इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4. What is the trace? Therefore trace is equal to, what are diagonal element? 1 plus 4 is equal to 5. So trace is, so understand trace. Now let us see, there are two types of singular matrix and non-singular matrix. So, okay, trace of A is equal to 9. Okay, so let us see. Now there are two types. One is a singular matrix. So what is a singular matrix? A square matrix. Square matrix A is singular if its determinant is equal to 0. Okay, and non-singular what? If determinant of A not equal to 0. That is non-singular matrix. Okay, अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल A is equal to, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 6 3 6 1 2. ओके, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं A इज इक्वल टू 3 2 4 5. यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो. डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 6 1 2, एंड दैट इज इक्वल टू 3 into 2 3 into 2 minus 1 into 6, that is 6 minus 6, it is equal to 0.
and therefore A is a singular. बराबर है. और यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to determinant of 3, 2, 4, 5, and that is equal to 3 into 5 minus 4 into 2. 3 into 5, 15, minus 4 into 2, 8, that is equal to 7, which is not equal to 0, and therefore A is a non-singular. So understand, A is a non-singular. So can we move ahead? Okay. अब देंगे null matrix. Null matrix. अब for null matrix definition, it may be a square or may not be a square. Rectangular भी हो सकती है. Okay. So a square matrix whose all entries are zero is called a null matrix. Okay. For example, एक मैट्रिक्स देखते हैं हम. ये व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. 3x3 ऑर्डर होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो ऑल एंट्रीज 0. ओके. सो aij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी I एंड j. ओके. दूसरा भी एक एग्जाम्पल नल मैट्रिक्स लिखते हैं. इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0. व्हाट इज द ऑर्डर हियर? 3/2. 3 रोज है, 2 कॉलम्स है. n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0. नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. So all these are null matrices. Is that clear? Now we move to the transpose of a matrix. Okay. So any matrix need not be square. Alright. Any matrix form by interchanging rows into columns or column into rows is called a transpose of a given matrix. A matrix transpose is formed by interchanging rows and columns. Is that clear? एक एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 रोज है और number of vertical lines are 4, so 4 columns. Okay, so therefore transpose of A, that is A transpose, it is denoted by A transpose is equal to. अब देखते हैं हम क्या होगा. तो पहला रो क्या है? 1 2 3 4. तो हमको इंटरचेंज करना है रोज इंटू कॉलम्स, तो वो पहला कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4. व्हाट इज सेकंड रो? 5 6 7 8. वो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 6 7 8. ओके. व्हाट इज थर्ड रो? 9 10 11 12. वो थर्ड कॉलम हो जाएगा 9 10 11 12. इज दैट क्लियर? ये हो गया. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? नाउ इट्स ऑर्डर इज 4 रोज and 3 columns. So let us see. The given matrix was of order 3/4. उसका ट्रांसपोज किया हमने, तो उसका ऑर्डर है 4/n. मतलब m/n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर मिलेगा आपको n/m. इज दैट क्लियर? सो n/m. इज दैट क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल देखो यहाँ पे B. ओके. सो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2. तो व्हाट इज B ट्रांसपोज? B ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू, पहला रो क्या है? 1 2, पहला कॉलम हो जाएगा. दूसरा रो -2 3, दूसरा कॉलम हो जाएगा. एंड व्हाट इज ऑर्डर? 2/2. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया B ट्रांसपोज. देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A. देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. देखो, हमने यहाँ पे लिया है, ये मैट्रिक्स लिया, ये स्क्वायर है क्या? नहीं, ये स्क्वायर है. मतलब दोनों मैट्रिक्स चलेंगे, रेक्टेंगुलर भी चलेंगे, स्क्वायर भी चलेंगे ट्रांसपोज लेने के लिए. बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. A इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. इज दैट क्लियर? सो लेट अस सी द एग्जांपल. एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम. आइडेंटिफाई अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक एग्जांपल लिखा है हमने. ए
Okay, so now A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ओके, कितना हो जाएगा? अब इसका ऑर्डर है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए हम सिमेट्रिक उसका वेरीफाई करेंगे। अब पहला रो क्या है? 3 -1 2, दूसरा रो क्या है? -1 2 1, दूसरा कॉलम लिखा। तीसरा रो तीसरा कॉलम लिखेंगे हम 2 1 2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? यस, हियर here A is equal to A transpose, and therefore given matrix A is symmetric. Is that clear? दूसरा एक एग्जांपल देखो, दूसरा एक एग्जांपल B मैट्रिक्स ये देखो। तो व्हाट इज सेकंड एग्जांपल? B is equal to 1 2 -2 3। नाउ B ट्रांसपोज क्या होगा? B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहला रो 1 2 है तो पहला कॉलम, दूसरा रो -2 3 है तो दूसरा कॉलम। ओके, नाउ अब ये दोनों में देखो कुछ रिलेशन है कि सेम है क्या? B इज नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज, बराबर है, एंड देयरफॉर B मैट्रिक्स is not symmetric. Is that clear? It is not symmetric. So did you understand what is symmetric matrix? When it is symmetric and when it is not. So in this way, the basic types of the matrices we have discussed today. So if you like this lecture, please subscribe the YouTube channel Maths Clinic Counseling Center, like it and share it. Thank you very much.